हे हाय अनुष्का। हाय टीना, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू बता तू मैं कैसी है? ठीक हूँ। तू बता कहाँ चली लॉकडाउन अब में? तुझे क्या बताऊँ अनुष्का, दिन पे दिन स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई एंड ऑयली सी हो जा रही है। ओफो पगली, बस इतनी सी बहुत बात। ट्राई कर लिया यार, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। आप लोग भी हिना की प्रॉब्लम से रिलेट करते हो? ऑफकोर्स करते होंगे, बिकॉज आजकल का हमारा डेली रूटीन एंड डेली डाइट के हिसाब से हर चीज़ अनबैलेंस्ड होती है एंड इट इज़ नेचुरल और ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ होती है। सो हर प्रॉब्लम के साथ उसका सॉल्यूशन तो ज़रूर होता है। सो आज जो मैं स्किन केयर शेयर करने वाली हूँ वो स्पेशली ऑयली स्किन लोगों के लिए है। सो वीडियो में एंड तक बने रहना, मैं हर एक स्टेप आपको बहुत ही बारीकी से समझाऊँ। सो बिना कोई देरी के लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो टाइटल देखकर तो आप जान ही चुकेंगे एंड ऑफ कोर्स आप रिलेट भी कर चुके होंगे। माई सेल्फ हिना एंड आई यूजुअली मेक वीडियोज ऑन स्किन केयर, हेयर केयर, रेसिपीज एंड मच मोर। Without wasting yours and my time, let's move on to the video. So वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए जान लेते हैं the reasons behind the oily skin. So step number 1 is cleansing. So cleansing के लिए मैं रॉ मिल्क यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो रोज़ वाटर या फिर टोमेटो भी यूज़ कर सकते हैं एज यू विश। So I'm done with my cleansing and you can see how clear my skin looks. So second step is scrubbing. So scrubbing के लिए मैं वॉलनट का प्रेफर करूँगी, black heads and white heads. So मैं हमेशा यही आपको प्रेफर करना चाहूँगी, मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ। So आप भी यही यूज़ करिएगा। So yeah. जस्ट रिमेंबर, मास्क हो या फिर स्क्रब हो, हम हमेशा अपर डायरेक्शन में ही इसे अप्लाई करेंगे और आपको रिंकल्स या फिर सैगिंग स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। सो थर्ड स्टेप कम्स टू मास्क. सो मैं मास्क के लिए 1 tablespoon of बेसन and a pinch of turmeric, this rose water. अगर बेसन किसी को सूट नहीं होता है तो आप इसे चावल के आटे से भी स्किप कर सकते हो. Just look at this. Now apply it over your face. तो मैंने मास्क अप्लाई कर लिया है एंड मैं इसे 15 to 20 मिनट्स रखूँगी एंड गेट मी ड्राई.
Guys, I'm done with my mask and look at this. So last step is this toner, and toner is really necessary for the oily skin. मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी शेयर किया है कि इस टोनर में मैंने क्या क्या इंक्लूड किया है, तो आप वो चेक कर सकते हो. Just pat it down, just pat it. Yeah, so I'm done with my skincare. So guys, I'm just done with my skincare. अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऑल्सो हिट द बेल आइकन से गेट ऑल द नोटिफिकेशन. Until then, stay happy. Bye bye.